नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका भारत 24 पर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक हुई। ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि अगर हत्या रुके तो सीज फायर ठीक। जेलेंस्की पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। रूस यूक्रेन साथ मिलकर काम करेंगे, ट्रंप की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं, जंग रोकने के लिए बातचीत के लिए हम तैयार हैं। आपने देखा इसके पहले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होती है। पुतिन और ट्रंप की लगभग 3 घंटे तक एक बंद कमरे में बैठक होती है। एक बाद में छोटी सी लगभग 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हालांकि उसमें अब यह कहा गया था कि अगली जो बैठक है वो मॉस्को में होगी। पुतिन ने इसका न्योता दिया था। उसके बाद अब ये मुलाकात हुई है ट्रंप और जेलेंस्की की, क्योंकि आपको याद होगा जब ट्रंप ने शपथ ली थी या जब चुनावी प्रचार प्रसार भी चल रहा था अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए, उस दौरान ये ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता होगी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप वॉर में फंस गए, ट्रंप टैरिफ वॉर में फंस गए ट्रंप, और उसके बाद अब ये कयास लगाने शुरू हुए हैं कि अब हो सकता है कि आने वाले समय में रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो जंग छिड़ी हुई है, वो अब रुक सकती है। क्योंकि ट्रंप ने पहले पुतिन से मुलाकात की। हालांकि क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ हुआ है, वो ऐसा सामने अभी नहीं आया। उसके बाद अब ये जेलेंस्की से मुलाकात होती है। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। जेलेंस्की और पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। अब ये देखना होगा कि महज ये एक तरीके से ट्रंप जो हमेशा राग अलापते हैं शांति का या युद्ध रुकवाने का, ये महज एकमात्र इस तरीके से कोई एक फिर हथकंडा है, या फिर वाकई में अब ये जंग रुकने की बारी आने वाली है। रूस यूक्रेन साथ मिलकर काम करें, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख पाएंगे। पुतिन से बातचीत के लिए तैयार जेलेंस्की, ये कहा गया जेलेंस्की की तरफ से जंग रोकने के लिए बातचीत के लिए तैयार। वहीं आपको बता दें व्हाइट हाउस में ट्रंप यूरोपीय नेताओं की भी बैठक हुई है। यूरोपीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करना चाहता हूं, ये ट्रंप ने कहा है। युद्ध जरूर खत्म होगा, ट्रंप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। युद्ध कब खत्म होगा लेकिन ये नहीं बता सकता है। 1-2 हफ्ते में युद्ध का फैसला हो जाएगा, शांति आएगी या युद्ध जारी रहेगा तय हो जाएगा। मेरी प्राथमिकता है लोगों को बचाना। त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कोशिश करेंगे, पुतिन चाहेंगे तो त्रिपक्षीय बातचीत होगी। ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन के लिए यूरोपीय सुरक्षा गारंटी का समर्थन है, हम यूक्रेन को अच्छी तरह से संरक्षण देंगे। ये ट्रंप का स्टेटमेंट आपको हम बता रहे हैं। दरअसल जब ये बैठक हुई, जब ये मुलाकात हुई, इसके बाद ट्रंप ने ये कहा कि रूस और यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। युद्ध तो खत्म जरूर होगा, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कब होगा हम ये नहीं बता सकते। साथ ही साथ वो 1 से 2 हफ्ते की बात यहां पर करते हैं और कहते हैं कि लगभग 1 से 2 हफ्ते में पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी 1-2 हफ्ते में, और ये फैसला हो जाएगा कि शांति आएगी या फिर युद्ध जारी रहेगा। उम्मीद है कि यहां पर अब युद्ध खत्म होने की कगार पर होगा। ट्रंप ने यह कहा है कि मेरी प्राथमिकता लोगों को बचाना है, त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कोशिश करेंगे। President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what, essentially. I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine, and I actually think there won't be. I think that's even overrated, largely overrated, but we're going to find out. And I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them, and we're going to make it very secure. और एक बार आपको सुना देते हैं जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई। Meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia, and I think there's a possibility that something could come out of it. And today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe, and we're going to be meeting with them right after this meeting. And thank you very much for being here. President Zelensky, you say in a post on X today, Russia must end this war, which it itself started. President Trump, you say
President Zelensky of Ukraine can end the war with Russia almost immediately if he wants to. Which is it? I can never say that. It's never the end of the road. People are being killed, and we want to stop that. So I would not say it's the end of the road. No, I think we have a good chance of doing it. It's been almost 4 years now that a lot of people were killed last week. A lot of people last week. I mean, millions of people killed, but a lot of people last week for whatever reason. A big number, a lot of soldiers, both on both sides. And I know the president, I know myself, and I believe Vladimir Putin wants to see it ended. And as you met with Putin on Friday, today you've got President Zelensky here. As you listen to Russia and Ukraine, which side has the better cards? Right Well, now? I don't want to say that. I'm just here to be. Look, this isn't my war. This is Joe Biden's war. He's the one that had a lot to do with this happening, and we want to get it ended. And we want it to end good for everybody. We want it to end good. The people of Ukraine have suffered incredibly. President Zelensky, are you prepared to keep sending Ukrainian troops to their deaths for another couple years, or are you going to agree to redraw the maps? Thank you for your question. So, first of all, we live under each day attacks. That today have been a lot of attacks and a lot of wounded people, and the child was dead, small one year and a half. So we need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners, and we will do our best for this. So, and I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Thank you. Mr. President, Vladimir Putin mentioned that the war will not end without addressing the root causes of this war. Have you had an understanding what are the root causes of this war? Well, look, the war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. A lot of reasons for it, and they'll be talking about it for a long time. But they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan. We're talking about the big places. When you look at you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the Congo, Republic of the Congo. That's been going on for 31 years. And so we've done a total of 6, and we really have 6, not including the fact that we obliterated, and it turned out to be a total obliteration, the nuclear, as you said, the future nuclear capability of Iran. And this one, I think we're going to get solved also. I feel confident we're going to get it solved.